Okay, so let's start. Let's start this topic of ratio and proportion. अब फ्रेंड्स जैसे आपको पता है आई विल से जैसे जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, देन रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेजेस है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मेंशन है। सर टाइम स्पीड डिस्टेंस मेंशन नहीं है, टाइम एंड वर्क मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो ऐसा नहीं है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। कुछ एक चैप्टर्स जो कि उन्होंने मेंशन किए हुए हैं उसमें रेशियो एक चैप्टर है। मैं क्लियर? तो रेशियो का कहां पर यूज होता है आई विल से, अगर आप किन्हीं दो सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हो देन आप रेशियो का यूज करते हो। ठीक है, सो आई विल से टू कंपेयर ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस, टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई दो सिमिलर क्वांटिटी हैं तो उनका आपको कंपैरिजन करना है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने टाइम्स है, सो दैट इज अ रेशियो, वहां पर रेशियो का आप यूज करते हैं। तो लेट्स से आप रेशियो ऐसे लिखते हो x इज टू वाई, एक्स अपॉन वाई, इसे आप बोलते हो एंटीसीडेंट और इसे बोलते हो कॉन्सिक्वेंट। हाँ जी, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, x is to y further represented हाँ जी। तो फ्रेंड्स रेशियो आप तभी लोगे जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो उनकी यूनिट्स सेम हो, सेम यूनिट्स होनी चाहिए क्वांटिटीज की, तभी रेशियो लोगे। अदरवाइज डिफरेंट यूनिट्स हैं किसी चीज की तो उसका रेशियो नहीं लोगे। मेक श्योर कि इनकी यूनिट सेम है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, या और जो दूसरी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी आप रेशियो लोगे उनका। ठीक है, दो सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है, एक क्वांटिटी दूसरे के कितने टाइम्स है। हाँ जी, न्यूमरेटर पार्ट एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर पार्ट कंसीक्वेंट। कई बार इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाता है, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है यार कई बार वो। एम आई क्लियर? तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस, सो लेट्स डू अनदर। तो इसका दूसरा देखते हैं यार, ये है आई विल से इसका जो अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना है तो सेकंड, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। लेट्स से आपके पास एक रेशियो है x इज टू वाई। हाँ जी, तो इसमें मुझे डुप्लीकेट रेशियो लिखना है। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा इनका स्क्वायर्स। x इज टू वाई एक रेशियो है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा इसका स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर रूट। हाँ जी, ठीक है, तो एग्जांपल ले सकते हो आप,
लेट्स से आपके पास 3/2 कोई रेशो था, तो उसका जो डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा, सो दैट इज 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 9/4। सिमिलरली फॉर अदर्स आल्सो ट्रिप्लीकेट भी डिफाइन कर सकते हो ऐसे ही यार, उसमें क्यूब हो जाएगा। हाँ जी, ट्रिप्लीकेट रेशो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो, इसको भी ध्यान में रखना है। अब क्या होता है यार, कई बार सर मुझे एंटीसीडेंट नहीं पता था, मुझे कंसीक्वेंट नहीं पता था, डुप्लीकेट रेशो ट्रिप्लीकेट रेशो मेरे को नहीं पता था, हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने कोई टर्म नहीं सुनी हुई तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है करना। ठीक है, तो मेक श्योर ये टर्म्स आपको कुछ पता हो। और देखते हैं और रेशोज। सो आई थिंक अब ये आपने लिख लिया होगा। सो लेट्स राइट दीज 4 रेशोज। So I think must be clear with this. So let's check another ratios other than this. Next is inverse ratio. इसमें एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो x/y है अगर कोई रेशो, तो वो क्या बन जाएगी y/x। इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो क्या है, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में बदल लेंगे। सो दैट इज इनवर्स रेशो फॉर अस। नेक्स्ट वन, कंपाउंड रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ लेता है यार कई बार। कंपाउंड रेशो बता दो मुझे यार, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो लेट्स से आपके पास 3 रेशोज हैं, तो 3 रेशोज हैं, तो अब कंपाउंड रेशो जब भी आपको निकालने, लेट्स से आपको 3 रेशो दे रखी हैं, 2 दे रखी हैं, 4 दे रखी हैं, जितनी मर्जी दे रखी हैं, तो कंपाउंड रेशो में एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, कंपाउंडेड जो रेशो आएगी आपके पास फाइनल, और कंसीक्वेंट्स कंसीक्वेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ACE अपॉन BDF। आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस आल्सो। तो इनका कंपाउंड रेशो ये बनेगा। तो एंटीसीडेंट की मल्टीप्लिकेशन और कंसीक्वेंट, इंपॉर्टेंट है यार, कंपाउंड रेशो पता होना चाहिए। तो सभी के जितनी भी रेशियोज दे रखी हैं, सभी के एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर दो और सभी के कंसीक्वेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कंपाउंड रेशो आ जाएगा। So I think must be clear with this also. तो लेट्स डिस्कस यार रेशियोज का कंपैरिजन कैसे करना है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये मैंने 6 टाइप की रेशियोज बताई हैं, अब रेशियोज का कंपैरिजन कैसे करना है वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो ये टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए कि एग्जाम में आ गई। ठीक है, तो जब भी आप रेशियो स्टार्ट करते हो, रेशियो पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो कुछ टर्म्स पहले डिफाइन करते हो। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रेशियो कौन कौन सी हैं,
कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे ही पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार वो स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन देगा देन हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका कोई एप्लीकेशन पार्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन में से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन इज, तो एज इट इज कोई रूल नहीं है इसमें। मुझे बताओ यार, ग्रेटर कौन है, लीस्ट कौन है, ठीक है, इसमें से बताओ एक बार। 5/8 और 9/14 में से ग्रेटर कौन सा है? हाँ जी, बताओ जल्दी से। एक तो तरीका है, इसका तरीका क्या है कि आप इसकी डेसिमल में वैल्यू निकाल लो। एक तरीका क्या है, या तो इनका न्यूमरेटर सेम कर लो या डिनोमिनेटर सेम कर लो। एम आई क्लियर? तो लेट्स से अगर आपने डिनोमिनेटर सेम कर लिया एलसीएम लेके, या न्यूमरेटर सेम कर लिया, अगर डिनोमिनेटर सेम कर लेते हो तो अब मुझे बताना है इसमें से ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर के लिए कंडीशन है कि सर न्यूमरेटर बड़ा हो, ग्रेटर के लिए कंडीशन है डिनोमिनेटर छोटा हो। अब ये दोनों ही केस किया जा सकता है। 8 और 14 का एलसीएम ले लो, ठीक बात है या नहीं? 8 और 14 का एलसीएम ले लो, या फिर 5 और 9, या फिर न्यूमरेटर सेम कर लो। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? और जिसका डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा वो फ्रैक्शन आपका छोटा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो। तो इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं लेट से, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आप एलसीएम से ही करते हो। हाँ जी, कर सकते हो इसे। अब चेक करो एक बार, एलसीएम अगर मैंने ले लिया तो लेट्स से कि मैंने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम से आप कैसे कर सकते हो इसे? हाँ जी, 56 से मल्टीप्लाई कर दो या तो इन्हें। हाँ जी, तो कौन सा बड़ा आ जाएगा? ये 35 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो आपका 9/14 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। यस और नो? एलसीएम ले लो यार, एलसीएम से किया जा सकते हैं क्वेश्चन। आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। ठीक है, तो नीचे तो आपका क्या आ जाएगा? 56 ही आ जाएगा। 56 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 56 से नीचे डिवाइड कर दो। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 35 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो सेम है, तो मुझे कंपेरिजन किसका करना है? सिर्फ न्यूमरेटर का। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका जो रेशियो होगा वो ग्रेटर होगा। एम आई क्लियर? और इसका अगर वाइस वर्सा भी ट्रू था ये, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रेशियो आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे मर्जी कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ग्रेटर रेशियो कौन सा है। तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को आप क्या करते हो? सेम बना लेते हो। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसमें जो ये ग्रेटर था, सो दैट वाज 9/14। सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन।
हाँ जी, लीस्ट फ्रैक्शन बताओ दोनों में से। हाँ जी, अब देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अगेन मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ 7 और 9 का 63, फिर एलसीएम से मैं इसे इसका डिनोमिनेटर सेम बना लूंगा और फिर मैं न्यूमरेटर को कंपेयर कर लूंगा। बट इस क्वेश्चन में क्या करते हैं यार, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं 6 और 7 का, तो वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, यहां पर 42 बनाना है ऊपर, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 6/7, उसमें 42 बनाना है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी। न्यूमरेटर इज सेम, 49 एंड 54 है यहां पर अब डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हैं। अब ये बताओ कि 1/49 बड़ा होगा या 1/54। ऑफकोर्स 1/49 बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर कम है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू 1/54। तो दैट मीन्स ये जो 42/9 वाला फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू 42/54। तो लीस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ये वाला। तो मेरा आंसर क्या होगा, 7/9। ऐसे भी कर सकते थे, न्यूमरेटर सेम कर दिया, एक केस में डिनोमिनेटर सेम कर दिया। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? I think must be clear with this. So let's do another. Proportion. ये सिंबल यूज करते हो, रेशो के लिए ये सिंबल यूज किया था। दो रेशियोज को इक्वेट करते हो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। तो A upon B is equal to C upon B, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, आई विल से इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज है ये। ए और डी को मैं बोलता हूं एक्सट्रीम, बी और सी को मैं बोलूंगा मीन्स। बी और सी मीन्स है मेरे लिए, ए और डी एक्सट्रीम है। लिखने का तरीका है, जो साइड में है एक्सट्रीम और जो बीच में है उसे मीन। अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ए इज टू बी और सी इज टू डी क्या है, प्रोपोर्शन में है। आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस आल्सो। प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है,
ठीक है, तो लेट्स से एक रेशियो है आपके पास ए इज टू बी और मुझे एक थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है इनके साथ। ठीक है, सो लेट्स से थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने ले लिया सी, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में निकालना है। तो मैं ऐसे लिखता हूं ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू बी इज टू सी। तो क्या बन जाएगा मेरे पास ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एम आई क्लियर? तो थर्ड प्रोपोर्शन में लेके आना है तो सी को और ले आओ यार, और ऐसे ही चलो जैसे आई विल से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू बी इज टू सी, उसी के आगे। ठीक है, देन उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वालिटी ऑफ रेशियोज ही होता है प्रोपोर्शन, और क्या होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एम आई क्लियर? और सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। लेट्स से आपको आई विल से कोई दो नंबर दे रखे हैं 16 और 32, या और कोई नंबर दे रखे हैं 4 और 10 दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो जो बाद में नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो स्टार्टिंग में दे रखा है। So I think must be clear with this. तो अब थर्ड प्रोपोर्शन आ जाए, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाए, सो आई थिंक वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 and 32। फोर्थ प्रोपोर्शनल भी निकालो। हाँ जी, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो 632 के बाद ही आएगा। तो लेट्स से x, एक और मान लिया मैंने x, तो 16 is to 32 प्रोपोर्शन 32 is to x। तो x निकाल सकते हैं यार हम, तो 16/32 इज इक्वल टू 32/x, 16 दूनी 32, x इज इक्वल टू 64। फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दो 3, 7 और 9 के। इसमें तो बन सकता है ना 3:7, x को मैंने 9 के साथ रख दिया। हाँ जी, तो 3/7 इज इक्वल टू 9/x, तो x इज इक्वल टू 21। So I think must be clear with this also. Let's check another proportion, so that is mean proportion, very important। mean proportion, third proportion, fourth proportion ऐसे निकालना है यार। proportion, so that is equality of two ratios। ठीक है, अगर आपको एक रेशियो दे रखी है तो दूसरी और वैसी सेम रेशियो निकालनी है, सो दैट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ओनली। उसका मीनिंग वही है, तो मैंने उसे c मान लो, d मान लो, x मान लो, तो कुछ भी मान लिया मैंने। ठीक है, तो 16:32, 32:x हो जाएगा। 3 दे रखी हैं, 3:7। ठीक है, अगली क्या हो सकती है 9:x हो सकती है। हाँ जी, मीन प्रोपोर्शन, सो लेट्स चेक इट।
हाँ जी, मीन प्रपोर्शन बिटवीन ए एंड बी। हाँ जी, ए और बी के बीच में मीन प्रोपोर्शन, सो लेट्स से एक्स मान लिया मैंने, तो ए इज टू एक्स, ठीक है, प्रोपोर्शन टू एक्स इज टू बी, तो ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी। हाँ जी, मीन प्रोपोर्शन बताओ 4 और 25 का। रूट 4 इंटू 25 हो जाएगा सीधा ही। हाँ भी, रूट 100 10 मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है मीन प्रोपोर्शन। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट वाज आई विल से सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए। रेशो क्या होती है, टाइप्स ऑफ रेशो वी हैव डिस्कस्ड, एंड देन प्रोपोर्शन आल्सो, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है अगर, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अगली टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि ये सेम प्रोपोर्शन में रहे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, एंटीसीडेंट क्या होता है, कंसीक्वेंट क्या होता है, पता होना चाहिए तुम्हें। इनवर्स रेशियो क्या होती है, कंपाउंड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कई बार, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिमिलरली फ्रॉम प्रोपोर्शन आल्सो, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन बता दो, थर्ड प्रोपोर्शन बता दो, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Okay, okay, so this is the first question, so let's try to solve this question. Okay, so see, what is this ratio? For example, you are having two similar or like quantities, and okay, and you want to compare them, so then these ratios are used. Okay, two similar or like quantities and you want to make a comparison, then there is the role of ratios. Okay, so let's see this question. Let's try to solve some of the questions from this. Brothers A and B had some savings in the ratio 4:5. They decided to buy a gift for their sister, sharing the cost in the ratio 3:4. After they bought, A spent two-thirds of his amount while B is left with rupees 145. Then the value of gift is. Okay, so that is based on ratio rupees 70, 105, 140 and 175. Yes, so let's try to solve these questions. Okay, so see, brothers A and B, they have some savings in the ratio 4:5. Okay, if you are having saving, okay, and this is the ratio 4:5. Okay, so I can assume it as that is A and B. A is saving, so let's write it like this. A is saving, so that is 4x, and this is 5x. This is because this is present in ratio form 4:5. Okay, I can say it like 8 is to 10, so that is also 4:5. Okay, 12 is to 15, so that is also 4:5. So I will put that is x here and x here to make it in value in absolute terms. Okay, so A, let's say, having the saving 4x and B is having 5x. They decided to buy a gift for their sister, sharing the cost. Okay, now sharing the cost. Okay, so they decided to buy a gift. So from here we can say cost of the gift. Okay, now the ratio they are sharing the cost in the ratio 3:4. Okay, so total would be, so let's say this is 3y and 4y, so total cost would be 7y for me. So this is 3y, and for A, and for B it is this 4y. Am I clear? 3y and 4y. After they bought, A spent two-thirds of his amount. Okay, after buying, so I will say A spent two-thirds of his amount while B is left with rupees 145. Then the value of gift is. Now see, value of gift.
So value of gift, so whatever the cost of the gift, so total cost for A 3y and for B, because there are only two buyers, so total cost for me would be 7y. I need to find out the value of 7y, and for which I need to find out y here. Okay, so after they bought, okay, so in the starting I will say A was having this much amount 4x, okay, and then he decided to buy a gift. Okay, so 3y, 4x minus 3y, I will say, so this much he done expenditure 3y. Okay, and this, after they bought, A spent 2/3 of his amount. ठीक है, आफ्टर बाइंग, तो बाय करने के बाद ए स्पेंट 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, सो अमाउंट वाज 4x. So I think must be clear with this. Okay, so next also, so B similarly for B also I will say, so B was having this 5x, left with rupees 145, left with rupees 145, so that is 5x minus 4y is 140. So now you can solve for x and y. Yes, let's try to solve this. Okay, so I think must be clear with this. Okay, so I will say, when you will do the calculation, okay, by elimination method, so this you can solve now very easily. Okay, so that is 8x by 3, and you can solve it. Okay, so this would come out to be 4x minus 3y is equal to 8x by 3, and this is 12x minus 8x by 3 is equal to 3y. So 4x is equal to 9y, so x is equal to 9y by 4. X is equal to 9y by 4, so just put 9y by 4 here. That is 5 into 9y by 4 minus 4y is equal to 145. Just take the LCM, 45 minus 16, so that is 29y is equal to 145 into 4. Okay, so 29 5 the 145, so y is 20. So y is 20, so this 7y would be 7 into 20, 140.
Sir, you must be clear with this question. Okay, sir, you must be clear with this question. So this was the question, and there were two brothers. So they were saving. They were having saving in the ratio 4:5. Okay, so let's say take total saving as a 9x, and for A the saving was 4x, and for B the saving was 5x. Okay, they decided to buy the gift for their sister. Okay, and sharing the cost in the ratio 3:4. Okay, so the cost, let's say total cost is 7y for the gift, and as they have shared the cost, so that is 3y and 4y for both A and B. After they bought, A spent two-thirds of his amount. Okay, so after buying, A spent two-thirds of his amount, while B is left with rupees 145. So I have just equated this. Okay, so you can find out the values of for both. I will say I am requiring the value of just y here. Okay, so I found out the value of y. Okay, just putting here, so that is 140. So I think must be clear with this question. Okay, so let's do another question now. Yes, so please try to solve this question now. Out of 120 applications for a post, 70 are males and 80 have driver's license. What is the ratio between minimum to maximum number of males having driver license? Yes. So let's try to solve this question. Okay, so let's solve this question now.
Okay, so this is a question. Out of 120 applications for a post, 70 are males. They are having 120 applications, 70 males, and 80 have driver license. So we are not knowing out of 80 how many male and female are there. 80 must be comprising of male and female both. So 120 applications, 70 are males, so that means 50 are females. 120 minus number of males, so we can write it like this. What is the ratio between minimum to maximum number of males having driver license? Very easy question. Minimum to maximum number of males. Minimum males with a driving license DL and maximum males with driving license. Am I clear? So maximum males, so that can have a driving license. So that means total 80 can have a driving license. Now see what is the condition here. Total 80% can have driving license. Okay. And now out of 80, so that means total number of males are 70. So that means 70 can have this driving license. All male can have a driving license. So that is, I will say maximum males can have a driving license. So that is 70. Minimum males with the driving license. Yes, minimum males with the driving license. Yes. So minimum males. So that means I will say minimum males with the driving license. So I will say that out of 80, 50 females, all females having driving license. Yes or no? So that means 80 minus 50. Minimum males having driving license. So I can say that all females having driving license. So that can be 50. So 50 females having driving license. So that I can see. So that is 30. If all females are having driving license, there are only two gender they are talking about. Okay, one is male and other one is female. So minimum male with a driving license. So that case can be if I give preference to other gender, so that is female, all females having driving license. All females having driving license. Okay, so there was some issue. See, minimum males with a driving license. So for this, I will say you can check all the females with driving license. So that is 50. Yes. So total members, I will say total persons with driving license. So that can be 80. Okay. Minimum males with driving license. So that I will say a total person minus total person with driving license minus female with driving license. Okay, so that is this 30. So 30 I will say, so that will be minimum number for male with the driving license, and maximum male so that can have driving license, so that is 70. So that is 3 by 7 or 3:7. So I think must be clear with this question. Yes. Any doubt till now? Okay, so 70 males and 50 females were there, and at a time they were saying that 80 persons are having this driving license. Okay, now you can see that maximum number of males with driving license, so that can be 70. Okay, minimum number of males having driving license. So total, I will say give preference to other gender having all the licenses. So whatever number they are having. Okay, so 80 minus all the females having driving license. 80 minus 50, so that is 30 has to be males. Okay, so this is a minimum number. Minimum numbers of males with driving license, so that would be 30. Maximum number of males with driving license, so that is 70. And they are asking about the ratio of this. So that is 30 by 70, so that is 3:7. So this was another question. So let's see another question now. Yes, in a certain exam, the number of those who passed was 4 times the number of those who failed. If there had been 35 fewer candidates and 9 more had failed, the ratio of passed and failed candidates would have been 2:1. Then the total number of candidates was, yes. So please try to solve this question.
Okay, so I think must be clear with this. So I will say question based on statement mainly. Okay, so this is the question again based on statement. Okay, so let's try to solve this question now. In a certain exam, the number of those who passed was 4 times the number of those who failed. Okay, so you are having one exam. Okay, and then they are asking about total number of candidates. Total number of candidates they are asking. Okay, so let's say total number of candidates. Total candidates is equal to x. Okay, so number of those who passed and number of those who failed. Okay, so passed candidates and failed candidates. So number of those who passed was 4 times the number of those candidates who failed. Yes or no? So this is the question. Okay, so total candidates I have assumed here. So let's say x. Okay, or otherwise, let's say I'm not taking x because they have provided me with this equation, this relation between pass and failed students. Okay, and for failed students, so let's say I am taking x. X students, x is the number of students who got failed. Okay, so the pass students number of students passed, so that would be 4x for me. Yes or no? So that means total candidates were 5x. So that's easy approach. Rather than I was taking this x and then further categorizing that. So they were talking in terms of students, so those who got failed. So let's take the number of failed student as x. So then total number of pass student would be 4x. So total students who took the exam, who appeared in the exam, so that would be 5x. They must be clear with this equation. Okay, now the statement changes. If there had been 35 fewer candidates, fewer means less. So that means earlier 5x total number of students, passed students 4x and failed 4x. Now the situation is total number of students gets, I will say total number of students who appeared in the exam. So that is lesser by 35. Okay, so this is total students now. Another situation, and 9 more had failed. So that means earlier x, so 9 more had failed. So number of failed students, so that is x plus 9. Then the ratio of passed and failed candidates is 2:1. They are talking about it. Okay, so I will say, so this is P upon F is equal to 2 upon F. So number of students, total number of students who passed. So passed, I can write it as total students appeared minus failed student, total number of failed students who got failed. Yes, passed. So passed students number can be find out from total students 5x minus 35 minus failed students, those students who got failed, so that is x plus 9. I think must be clear with this. Okay, so this is, I will say, value of for P, and value for x, F you know, value for F you know, x plus 9, and this is 2 by 1. So I think you are having one variable, so that is linear equation in one variable, and you can easily solve this. Okay, so P is 5x minus 35 minus x plus 9 upon F is x plus 9 5x minus 35 minus of x plus 9, so that is 4x, and this is minus 44 upon x plus 9 is equal to 2 by 1. So this would be 4x minus 44, 2x plus 18. So this is 2x,
and this is equal to 62. So x is equal to 31. So x is 31. So total number of candidates, so that was 5x. So 5 into 31, that is 155. So total number of candidates who took the exam, who appeared for the exam, so that was 155. Okay. And further past students were this in the ratio 4:1. Okay. So I think must be clear with this question. So whatever the statement they have given, in the question, so that is important for us. Okay. Just whatever you have to find, or in terms of which you are given the data. So let us assume as x or y. Okay, then form the equations and accordingly you can find out. So this was another question. I think must be clear with this question. So read the statement very carefully, and from the statement you can frame this linear equation and can solve these questions. Okay, so I think must be clear with this. So I assume total number of candidates as this, then the ratio you were given with 4:1. So total 4:1, so total would be 5x. Okay, and accordingly you can make these relations. That was third. That is second. I have discussed with you, and this was first. See, students often get confused that how you equated it, this 4x minus 3y is equal to, I will say, A spent 2/3 of his amount, so that is 2/3 of 4x. After they bought, they've clearly mentioned after buying what happened. So this is given you as a right hand side. Okay, so A spent 2/3 of his amount while B is left with rupees 145. Okay, so I think must be clear with this. This was another question, very logical question. Okay, from the data itself, you can give me maximum, find the ratio between the minimum to maximum number of males so that are having driving license. So maximum males, so that can have driving license, so that is 70 minimum. So this 80 minus all the females 50, so that is 30/70, 3/7. Again, very easy question. Third, let's do this question now. Good question. In a colored picture of blue and yellow color is used in the ratio of 4:3 respectively. If in upper half blue is to a yellow is 2:3, then in the lower half, what is the ratio of blue and yellow color? Very good question. So let's try to solve this question. Okay, so very good question, I will say. So let's try to solve this question. In a colored picture of a blue and yellow color, so you are having one picture. So, and this picture is using this color, that is a blue and yellow, two colors have been used. Blue and yellow color is used in the ratio of 4:3 respectively. 4:3 की रेशियो में इसे I will say, so that is these colors have been used. Okay, so let's try to solve this question. So let's take, I will say, total colored part, because they are talking about this coloring only. So total colored part is equal to 170.
In place of 100, I am taking this as a 70. Okay, so because as you can see, blue and yellow color is used in this coloring, so that is in the ratio 4:3, and it would sum up to be that is 4 plus 3 7. Okay, so that will get easy for me. Okay, and 70 will easily be cancelled out by this 7, total 7. Okay, so otherwise also you can take another number. Okay, and I have took the multiple of 7 only here, so that I can make the calculation easy for me. Okay, and so I can let's say the total colored part, so that is 70. Then for this blue colored part, can I find out? So yes, blue upon blue plus yellow, so blue is 4 and blue plus yellow is 7. Similarly for yellow, total yellow is how much out of 7? So that is 3 out of 7, and blue is 4 out of 7. Now you have assumed total colored part as 70. So let's make it in absolute terms. So that is 40 and that is 30. I think must be clear with this. So this is part colored with blue color, part colored with blue color, and this is the part colored with yellow color. I took multiple of 7, so that is 70, so that I can make it easy for myself. Okay, otherwise you could have taken, I will say 100 also. Okay, so like this we can solve this. Okay, so part colored with yellow. Now what they are talking about, if in upper half blue and yellow ratio is 2:3, upper half they are talking about. In upper half they are talking about that the how the blue and yellow color is being used, so that is in the ratio of 2:3. Okay, so if you have took total colored part as 70, so upper half would be, so halves would be, I will say, of 35 each. Okay, and then you can find out blue color used in upper half. So let's say it as UH. So blue used in UH. So that is 2 out of 5. So 2 by 5 of 35, and yellow in upper half 3 by 5 into 35. So that is 14 and that is 21. 14 and 21. So I think must be clear with this. Now the lower half, then in the lower half the ratio of a blue and yellow color is. So this is the question. In the lower half, yes. So how can I find out for lower half? Okay, so you can see that this part colored, total part colored with blue, so that is 40, and in the upper half, so blue is, so that is 14. Okay, so for lower half, total minus upper half, so I will do, so blue would be, I will say, 26 parts, and for yellow it would be total minus upper half 30 minus 21, so that is 9. So ratio would be 26:9. Answer would be option C for me. So I think must be clear with this. You were given the ratio for upper half, okay, not for lower half. So that's why I have to subtract, okay, the values this of total color out of total colored part values for I will say upper half from total colored part. So I have assumed, because here they have said that in a colored picture of blue and yellow color, blue and yellow color is used in the ratio 4:3. So that means 7 parts. So I took a multiple of 7, so that is 70. Okay, so then I have take that out of total colored part, so part colored with blue color, so that is 40, and with the yellow color, so that is 30. Okay, and for upper half they have given the ratio of the colors blue and yellow.
Okay, so blue color used in blue part in upper half, so that is 14. Yellow part in upper half, so that is 21. So for lower half, so that will be total colored part minus this upper half. I think must be clear with this. So this would be the ratio for lower half. Okay, so I think must be clear with this question. So these type of questions can be there in your exam. Okay, so just be careful how to do these questions. Okay, so don't make silly mistakes, otherwise your question can be wrong there. Okay. Okay, so let's do another question now. Yes, this is the another question. Cost of a diamond varies directly as the square of its weight. A diamond broke into 4 pieces with their weights in the ratio of 1:2:3:4. If the loss in total value of the diamond was rupees 70,000, what was the price of the original diamond? Yes. So here they are saying the cost of a diamond varies directly as the square of its weight. And diamond gets break into 4 pieces, and जिनका weights इतना इतना है 1:2:3:4. Okay, if the loss in total value of the diamond was 70,000. Yes, so that is the question now. So what can I do here? Very easy question, I will say. Cost price of a diamond varies directly as square of its weight. Simply this thing is given to me. Yes or no? And diamond gets break with their weights. So weights की ratio further दे रखी है pieces की. Weight of pieces x 2x, 4 pieces are there, 3x 4x, x 2x 3x 4x. Okay, so total weight, so that is of these pieces 1 2 3 4, so that is 10x. So diamond got break into these 4 pieces. Okay, so the total weight I will say, so that would come out to be 10x. Okay, so that means I will say and as you know that cost is proportional to weight square. Okay, so cost price of diamond, so that would be, I will say 10x whole square, so that is this 100x square. So you can remove this proportional sign with assuming some constant k. Okay, otherwise also, and so cost of diamond will come out to be 100x square. So I need to find out the value of x square here. Other than this, what I am being given with here, that if the loss in total value of the diamond was 70,000. Okay, so that means if I calculate CP for each piece, okay, so what I get, so for first piece it would be x square, for second piece it would be 2x square, for third piece 3x square, and fourth piece 4x square. So 16x square, 9x square, 4x square, x square. So that would be 30x square. So that would be 30x square. So if the loss in total value of the diamond was rupees 70,000, yes or no? So total cost 100x square, because proportional to square. Because it is proportional to square, that's why you can find out this difference, and this is 30x square. Okay, this is for whole diamond, I will say, so that is total cost, and you are taking for each piece now cost, so that would come out to be 30x square. So loss in the value, loss in the cost,
so that is 100x square minus 30x square, so that is 70x square. लॉस कितना हो जाएगा यार टोटल में से फॉर इंडिविजुअल पीसीज का जब कॉस्ट आप सम अप करोगे उसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दैट वुड बी 70x square and this would come out to be 70,000. I think must be clear with this. So you can equate it now. So 7 is 7,000. So x square is 1,000. The value of x square comes out to be 1,000. And as you know that CP of diamond is 100x square. So 100x square. So just put a value of x square is 1,000. So 100 into 1,000 is 1 lakh. 10 power 5. So my answer would be option A. Okay. Yes. Class timing is 6 p.m. every Monday. Okay, and you can see these 4 to 5 series classes, and they are going on. Okay, so you can check daily. These 4 to 5 series is going on from 6 to 8 p.m. So you can check. Okay, so this was another question. I will say another good question. So cost was proportional to square of the weight, and the diamonds gets break in 4 parts. Okay, so that is, and their weights are in the ratio 1:2:3:4, and I took the weights as x, 2x, 3x, and 4x, and correspondingly their cost price would be x square, 4x square, 9x square, and 16x square. Okay, so other than this, total weight is 10x. Weight is 10x overall. Okay, so cost of this original diamond would be 10x whole square, so that is 100x square. But cost for each piece would be this 30x square. Total cost was 100x square, cost for each piece, so that is 30x square. So that means there is a loss in the value. So 100x square minus 30x square, so that is 70x square. And this term was given to you in absolute terms. So that was 70,000. So x square is 1,000. X square is 1,000. So that is 100 into 1,000. So that is cost price. You need to find out price of the original diamond. So that is 1 lakh rupees. So that was another question, friends. Okay, so I think must be clear with this question also. So that was 5th question, that was 4th question, 3rd question we have done. This was another question, minimum to maximum number, and that was another question for us. Okay, so thank you very much, friends. Okay, yes, keep watching your PDF, friends. Thanks once again.